A very good morning to all of you and welcome to the social science class. Yes beta, today we are going to start new and last chapter of geography and the chapter name is Life in the Deserts. Okay, so let us start. See, vast stretches of nothingness, sandy surface on rocky waste, extreme arid climate, life is the picture of a desert landscape. You know that deserts are dry areas of the world with scanty or nearly no rainfall over long periods. That means desert ऐसे places हैं totally dry places और extreme temperatures जहाँ या तो बिल्कुल नो रेनफॉल है या फिर स्कांटी मीन्स थोड़ी बहुत काफ़ी लंबे पीरियड तक रेनफॉल नहीं होता एंड द एवरेज रेनफॉल इन दीज एरियाज इज़ लेस देन 25 सेंटीमीटर इन अ ईयर एंड द टेम्परेचर कंडीशंस आर एक्सट्रीम टोटली एक्सट्रीम वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर exist between day and night and between summer and winter. वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स डे और नाइट के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होता है बिटवीन समर एंड विंटर ऑल्सो एंड सच एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन रिस्ट्रिक्ट्स प्लांट ग्रोथ और एक्सट्रीम कंडीशंस होने की वजह से एक्सट्रीम टेम्परेचर होने की वजह से प्लांट्स ग्रोथ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है सो डेजर्ट्स एरियाज आर मोस्टली बेयर विद वेरी लिटिल वेजिटेशन. It means that in deserts very little vegetation is there. Now so some common factors. See the common factors between all deserts of the world is aridity or very low rainfall. Extreme temperature की वजह से and दूसरा main common factor है low rainfall. So depending on temperature they may be classified into two parts. First one is hot desert, second is cold deserts. See, hot deserts located in the tropical regions like Sahara Desert of Africa. They are basically situated roughly between 20 degree and 30 degree north and south latitudes on western margins of continents in dry trade wind belt. This is the actual location of the Sahara Desert. Next is B part, cold deserts located in the interior of the continents in the rain shadow areas of the mountains. In these two parts are here the cool temperate deserts, the Gobi Desert in the Central Asia which is bitterly cold especially in winter. Central Asia में है ये Gobi Desert and Ladakh in Jammu and Kashmir in India. So some people also refer the vast ice caps of Arctic and Antarctica as cold frozen deserts due to their hostile climate. कुछ लोग इसे आइस कैप्स को जस्ट लाइक जो आर्कटिक और अंटार्कटिका जो फ्रीजिड जोन में है उसे कोल्ड फ्रोजन डेजर्ट्स भी बोलते हैं. वाई? ड्यू टू देयर हॉस्टाइल क्लाइमेट. Now we will discuss about the tropical hot desert Sahara. Firstly we will discuss about the Sahara and then we will discuss about the cold desert Ladakh. So see, the name Sahara Desert must be familiar to all of you. You are reading from the class 5 about the Sahara Desert. It is the largest desert in the world and you can easily locate it on the world map. You can identify it without difficulty on a satellite imagery of the world. You can see the figure 11.1 here, satellite image of Sahara Desert. Now the location of Sahara Desert. The Sahara Desert is located in North Africa and it stretches from the Atlantic coast to the Red Sea. This is the actual location including parts of the Mediterranean coast and the desert covers parts of Morocco, Tunisia, Western Sahara, Mauritania, Algeria, Libya, Egypt, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad and Sudan. These are the parts of desert, Sahara Desert. And the Sahara Desert cover a vast expanse of nearly 9 million square kilometers. इतना मतलब vast है ये area. कितने area में? 9 million square
किलोमीटर एंड इट इज़ ऑलमोस्ट एज लार्ज एज द यूएसए, इतना बड़ा है जितना कि यूएसए, एंड नियरली थ्राइस द साइज ऑफ इंडिया, इंडिया का जितना साइज़ है उसका 3 गुना, 3.24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया का है, और जो सहारा डेजर्ट का है 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ओके, एंड द सहारा डेजर्ट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म स्ट्रेच ऑफ ओनली सैंड ड्यून्स एज वी यूजुअली विजुअलाइज व्हेन द नेम डेजर्ट इज़ मैंशनड. वहाँ सिर्फ और सिर्फ सैंड ड्यून्स नहीं है, और भी बहुत कुछ है. इन पार्ट्स द सहारा इज़ अ सी ऑफ सैंड. दूर से देखने में ऐसा लगता है कि सैंड के समुद्र में आए हम, विद शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स. इन सम पार्ट्स वी कैन सी क्रेसेंट शेप्ड, मशरूम शेप्ड, आपको याद होगा मशरूम शेप्ड सैंड ड्यून्स, क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स कॉल्ड बार्चन्स, जिन्हें बार्चन्स भी कहा जाता है. एंड इन पार्ट्स ऑफ इजिप्ट द सैंड ड्यून्स आर लॉन्गिट्यूडनल एंड आर कॉल्ड सिप्स, and the dunes grow and creep forward with the constant movement of the wind in the same direction. ये dunes जो हैं basically कैसे move on करती हैं? With the direction of wind. And the rest of the Sahara is rugged and rocky with mountains and plateaus. So they have bare rocky surfaces without vegetation as seen in figure 11.1. That means टोटली वहाँ पे सैंड ही सैंड होती है, कोई भी वेजिटेशन अवेलेबल नहीं है, बेयर रॉकी सरफेस है विदाउट वेजिटेशन. ओके, एंड इन सम अदर पार्ट्स लाइक द सहारा प्लेन इट इज़ ए मोनोटोनियस स्ट्रेच ऑफ सैंड एंड ग्रेवल विद रॉकी आउटक्रॉप्स 2500 मीटर हाई. दैट मीन्स वहाँ भी कुछ हाइट तक पहुँची हुई हैं उनकी जो रॉक्स हैं, जो सैंड की रॉक्स हैं. एंड टू द ईस्ट ऑफ द सहारा फ्लोज नाइल, and to its west flows Niger and Senegal Rivers. These are the rivers in the Sahara Desert. So on its southern edge is Lake Chad, and it is the only freshwater lake of this region. Please underline these lines also. And it is the only freshwater lake of this region. Oases are also found at spots where water is डिस्कवर्ड. ओएसिस यू नो दैट कि डेजर्ट में जहाँ कहीं भी वाटर अवेलेबल होता है दैट इज़ कॉल्ड द ओएसिस. नाउ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सहारा डेजर्ट इज माउंट एमी कॉसी इन टिबेस्टी माउंटेन, एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ सहारा डेजर्ट इज कटारा depression which is located much below sea level. Please underline these lines also, highest point and the lowest point of Sahara Desert. Okay, now we will discuss about the climate. See, the climate of Sahara Desert. The climate of Sahara is one of the harshest in the world. सबसे harsh climate है world में, and it has hot and dry climate with extremes of temperature. And summer temperatures soar up to 50 degrees Celsius. It's very high, often reaching as high as 55 degrees Celsius. 55 तक चला जाता है वहाँ टेम्परेचर. सी एट प्रेजेंट इन इंडिया मतलब अगर 45 46 तक जाता है, दिस इज़ नॉट बियरेबल. तो यू कैन इमेजिन कि 55 डिग्री सेल्सियस इज़ मोर देन इनफ. सो वाइल इन विंटर द टेम्परेचर्स में ड्रॉप टू बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे आ जाता है. एंड द आउट ब्लोइंग विंड्स आर डिवॉइड ऑफ मॉइस्चर, ड्राई एंड हॉट. और जो विंड्स वहाँ चलती हैं उनमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता. दे आर वेरी ड्राई एंड हॉट. एंड द रैपिड हीटिंग ऑफ द सैंडी, सैंड का एक नेचर है कि बहुत जल्दी हीटअप होती है एंड कूल डाउन होती है. हीटिंग ऑफ द सैंडी एंड रॉकी सरफेस ड्यूरिंग द डे मेक्स द हीट स्क्रॉचिंग. सो दैट दिन में जो गर्मी होती है, स्क्रॉचिंग मतलब काटने वाली गर्मी होती है. सो सिमिलरली द रैपिड लॉस ऑफ हीट ड्यूरिंग नाइट. अब सैंड का एक नेचर ये भी है कि वो बहुत जल्दी कूल डाउन होती है. सो दैट नाइट में एकदम से क्या होता है, टेम्परेचर बिल्कुल डाउन जाता है. ब्रिंग्स डाउन द temperatures. Thus the daily range of temperature is high. So daily जो temperature है बिल्कुल different रहता है and high रहता है. And clouds cannot be formed in such dry conditions. You know that clouds की formation हमेशा तब होती है जब air में moisture होता है. So in the dry conditions clouds cannot be formed. So hence the skies are cloudless and the clear. So thus further affects the temperature, and average rainfall in the desert is about 25 centimeter or less. So after long intervals torrential rain of short duration may fall at places. See, in the previous chapter you have read about the rainfalls. So torrential rain
is a type of rain in the Sahara Desert. So this is due to convection currents, but the water disappears immediately because क्योंकि बहुत hot temperature evaporation process is very high, but the water disappears immediately due to the sandy soil, and high rate of evaporation further dries it up fast. So some areas do not receive rains for years. Now next is natural vegetation. See what is natural vegetation. Sahara desert में किस type की vegetation available है? See, the harsh and dry conditions of Sahara restricts the growth of plants. Plants grow नहीं करते हैं, and nevertheless some plants have adapted themselves to the desert conditions. But फिर भी कुछ जो desert area में vegetation होती है, this is also available. So they may be classified into two types. A, desert areas near the tropics have small poor grasslands. Small shrubs occur in the desert along the Mediterranean region. So near tropics हैं, so poor grasslands are there, but some shrubs are there. Next is in the actual desert areas of Sahara, xerophytic plants are also found. Xerophytic means just like cactus, thorny bushes, and they have long roots that tap ground water, क्योंकि बहुत long roots होती हैं जो ground water को अपने तक succulent करती हैं. And the succulent stems store food and water. Leaves are transformed into spines to reduce loss of moisture. Leaves भी इस type की होती है कि अपने अंदर moisture को retain करके रखती हैं. And cacti and acacia are common vegetation. So some patches of grass and scrubland and cluster of date palms are found in the Oasis area. Now about the wildlife. See, the typical animal of Sahara desert is camel. You know that desert में हमेशा camel ही होता है ना. And other animals of Sahara are the zerboa, Saharan hare, fennec foxes, hyenas, jackals, poisonous scorpions, snakes, and the lizards. Now next is people. Now about the people of Sahara desert. कैसे लोग होते हैं वहाँ? Sahara desert, like all the deserts of the world, is thinly populated. क्योंकि extreme temperature है, so that population बहुत कम है. But despite in harsh conditions, different tribes have learned how to survive in these extreme conditions and pursue different economic activities. So that in harsh conditions में ये अलग अलग tribes किस तरीके से survive करते हैं? Let's see. The Tuareg are a nomadic tribe who live in the western Sahara. एक nomadic tribe है जो वहाँ रहती है Tuareg नाम से. And another nomadic tribe are the Arab Bedouins, and they live by trading salt, hides, leather, date palms and other goods across huge distances. और ये जो nomadic tribe है basically क्या करते हैं? Salt, hides, leather, dead palms वगैरह को huge distances तक पहुँचा के अपना business करके survive करते हैं. So camels are their main mode of transport, and they wander from place to place in their caravans. Caravans means groups. They rear livestock like camels, sheep, goats and horses. These animals provide them food, milk and meat, hides and skin for their tents, sleepers, water bottles, wool and hair for the carpets, mats, blankets and clothes, etc. Okay, अब वो क्या पहनते हैं? They wear long robes, बड़े बड़े robes पहनते हैं that protect them from desert storms and scorching hot winds, जो उन्हें सेव करता है, जिन्हें robes पहनते हैं. The robes that the Tuaregs wear are blue in color, while the Bedouins wear white robes. Different है. जो Tuaregs हैं, they wear blue color, and Bedouins wear white robes, and they live in temporary tents in the deserts. The long train of camels in the past crossed of the desert to reach the Mediterranean coast. Camels की long train, that means camels एक line में चलते हैं कहाँ तक पहुँचने के लिए? Past cross the desert to reach the Mediterranean coastal area. So they carried slaves, ivory, gold and salt also, but they are gradually decreasing in number. But आजकल ये बहुत decrease होते जा रहे हैं. The hardships of the desert have led many to give up the wandering life. Today though still come follow this nomadic life. Most have become settled farmers, क्योंकि ये nomadic
ना हो के अब ये वहाँ पे सेटल्ड फार्मर्स बन चुके हैं. सो सम हैव टेकन अप जॉब्स इन द माइनिंग इंडस्ट्री, माइनिंग, while some have become tourist guides also. So oases are the water holes of the desert. You can see the figure 11.4. Oasis क्या होते हैं? Water holes होते हैं deserts में, and they are the most prized locations of the in the desert. Desert में अगर ये मिल जाता है तो ये just like looking like prized locations. And the availability of water favors agriculture and settled life. यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होने की वजह से एग्रीकल्चर को फेवर करते हैं एंड द लाइफ ऑल्सो. डेट पाम, सीरियल्स लाइक wheat, rice and barley and vegetables are grown here. With irrigation, larger areas near it have been brought under cultivation. Crops like cotton are grown in the Nile Valley in Egypt, and Egyptian cotton is famous throughout the world. And the Dogon people of Mali are farmers. वहाँ एक place है Dogon people, वहाँ के लोग हैं, people of Mali they are farmers. And the oases also act as trade centers for the nomads people. Now modern times have brought rapid changes in the Sahara desert. आज के टाइम में बहुत changes हो चुके हैं, like discovery of petroleum and natural gas in some parts of the Sahara has changed parts of the desert landscape. Oil and natural gas are the foundation of Algeria and Libya's economy. दो countries हैं oil और natural gas, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अल्जीरिया एंड लीबिया, उसने वहाँ की इकोनॉमी को टोटली चेंज कर दिया. ओवर द ईयर्स रेवेन्यू फ्रॉम दीज हैज़ एनकरेज्ड अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन, एंड सम ऑयल इज ऑल्सो ड्रिल्ड इन Egypt. Apart from oil, uranium, copper, phosphorus, manganese and iron ore are also mined in the parts of Sahara. So now next and last topic of the Sahara desert is changing landscape. See, the natural landscape of the deserts are gradually getting dominated by the cultural landscape in the some areas. जो natural landscape and deserts के they are gradually changing. Oil and gas plants are being set up, so that solar power plants and windmills are being set up to provide electricity also nowadays, and projects are being taken up to draw water from the underground the desert aquifers. इतने फास्ट एक्वीफायर्स लगाए हुए हैं कि वहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि अंडरग्राउंड वाटर से भी पानी निकाला जा सके. डिसैलिनेशन प्लांट्स are being set up to make fresh water from sea water by separating salt to supply water to the developed cities of the Sahara deserts. अब नए नए बड़े बड़े डिसैलिनेशन के प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं सो दैट सी वाटर को फ्रेश वाटर में चेंज करके उसे यूजेबल बनाया जा सके. सो मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड बिल्डिंग्स ऑल्सो विद एमिनिटीज़ लाइक एयर कंडीशनिंग टू बीट द हीट हैव कम अप. फुली AC बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं. ट्रक्स, ट्रैक्टर्स एंड सफारी जीप्स आर टेकिंग the place of camels for the transport of goods and people also. Parts of Sahara are now accessible by aeroplanes also. Now Sahara desert में आप by aeroplane भी पहुंच सकते हैं, and plans have been undertaken to construct trans-Saharan railways. अब नए plans भी चल रहे हैं वहाँ पे railways चलाने के. So at the time the desert is growing and extending southward, this area south of the Sahara is called the Sahel. So during droughts, the dry grasslands turn into deserts with infertile dry soil and fine dust. Okay, so this was your topic of Sahara. The next part, Ladakh, we will do tomorrow. Thank you. Have a nice day.